Good morning, learners. Today, here in this video, we will discuss a new topic that is on fundamental rights. So, in this video, we will basically discuss the basic facts of fundamental rights, features, amenability, and importance of fundamental rights. Then, we also explain the fundamental rights that we have as a citizen of India. So, fundamental rights are the basic human rights enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. Significantly, fundamental rights are justiciable or enforceable by the courts subject to certain conditions. The fundamental rights embodied in the Part 3 from Article 12 to 35 of the Constitution guarantee civil rights to all Indians and prevent state from encroaching an individual's liberty while simultaneously placing upon it an obligation to protect the citizens' rights from enforcement by the society. 7 fundamental rights were originally provided by the Constitution, but the right to property was removed from Part 3 of the Constitution by the 44th Amendment in 1978. So फंडामेंटल राइट्स जो है वो सब एक्चुअली बेसिक ह्यूमन राइट्स है और ये सभी सिटीजन के लिए है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में और फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 तक है। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स था लेकिन अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स था पहले उसको फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है इन द ईयर 1978 through 44th Constitutional Amendment Act. So the purpose of fundamental rights is to preserve individual liberty and democratic principles based on equality of all members of society. Fundamental rights act as limitations on the powers of the legislature and executive under Article 13, and in case of any violation of these rights, the Supreme Court of India and the High Courts of the states have the power to declare such legislative or executive action as unconstitutional and void. These rights are not absolute and are subject to reasonable restrictions as necessary for the protection of public interest. So, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का मेन एम ऑब्जेक्टिव क्या है? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रिजर्व करना। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसका वायलेशन होने से प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियरी है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे तो उस लॉ को क्या कर सकते हैं वो लोग एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोल के डिक्लेयर कर सकते हैं। देन some fundamental rights are available only to citizens. For example, Article 15, 16, 19, 29 and 30. Fundamental rights are not absolute but qualified. Reasonable restrictions can be imposed on fundamental rights. The reasonability of such restrictions is decided by the Supreme Court. So, fundamental rights जो है वो absolute नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम नहीं है। जब कोई मतलब चेंज का जरूरत होगा तो फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है चेंज किया जा सकता है और फंडामेंटल राइट्स हम लोग एब्सोल्युटली एंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ पे भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे हम लोग को बोलने का अधिकार है, ये हम लोग का फंडामेंटल राइट है, लेकिन हम लोग ऐसे बात नहीं बोल सकते जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। सो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंजॉइंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। इसका मीनिंग ये है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने से हम लोग क्या कर सकते हैं कोर्ट में या जा सकते हैं
to ensure justice. Justice मांगने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं. Then fundamental rights are defended and guaranteed by the Constitution. Indian Constitution फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं और इंश्योर करते हैं टू ऑल इट्स सिटीजन्स. These rights strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control. Some fundamental rights are negative in character, while others are positive. Negative fundamental rights entail limitations on government, while positive fundamental rights impose an obligation on government to take measures. Next, fundamental rights can be amended by the Parliament via a Constitutional Amendment Act so long as they do not violate the basic structure of the Constitution. So, fundamental rights का जो provisions है, वो Parliament क्या कर सकते हैं, amend कर सकते हैं. But Constitution का जो basic structure है, उसमें क्या नहीं कर सकते, कोई ऐसा provisions का violation नहीं कर सकते. Fundamental rights can be suspended during the operation of a national emergency, except the rights guaranteed by Article 20 and 21. Additionally, fundamental rights under Article 19 can be suspended only during operation of emergency declared on the grounds of war or external aggression. जो Article 20 and 21 है, इसके अलावा बाकी जो fundamental rights है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम बाकी सब फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है. Parliament can also restrict or abrogate the application of fundamental rights in case of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, and analog services. Only Parliament can make a law for the enforcement of the fundamental rights. Fundamental rights can be restricted while martial law in force. The scope of fundamental rights is limited by Article 31A, 31B, and 31C. Then, coming towards the amenability, how we can amend fundamental rights. So, any changes to the fundamental rights require a constitutional amendment that should be passed by both the houses of the Parliament. The amendment bill should be passed by a special majority of the Parliament. As per the Constitution, Article 13(2) states that no laws can be made that take away fundamental rights. So, fundamental rights में कोई modification लाना, कोई changes लाना हो, तो कैसे कर सकते हैं? हम लोग का Parliament consists of two houses. One is लोकसभा and राज्यसभा. So, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में क्या होना पड़ेगा, जो बिल है फंडामेंटल राइट्स चेंज करने का जो प्रपोजल है वो क्या होना पड़ेगा, वो प्रपोजल पास होना पड़ेगा. और सिर्फ पास होने से नहीं होगा, क्या चाहिए होगा, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा. देन इस फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट, देयर इज अ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड. Okay, so fundamental rights are very important because they are like the backbone of the country. They are essential for safeguarding the people's interest. According to Article 13, all laws that are violative of fundamental rights shall be void. There is a provision for judicial review. The Supreme Court and the High Court can declare any law unconstitutional on the grounds that it is violative of the fundamental rights. It is also to be noted that Article 13 talks about not just laws but also ordinances, orders, regulations, notifications, etc. So, ये जो fundamental rights है, इसका कोई importance है क्या? हाँ, ये fundamental rights are very important. क्योंकि ये fundamental rights है जो लोगों का जो interest है वो क्या करते हैं, safeguard करते हैं. Now, explaining fundamental rights. So, Article 12 states that the state includes the governmental and Parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. So, Article 12 is about the definition. Then Article 13 concerned with laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights, such as all laws enforced in the territory of India
immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall do to the extent of such inconsistency be void. Then the state shall not take any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. मतलब आर्टिकल 13 में है कि जो लॉ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा वो लॉ क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड उस लॉ को क्या किया जाएगा, वॉइड किया जाएगा. Then first we can say one fundamental right that is inserted in the Indian Constitution is right to equality. From Article 14 to 18 of the Indian Constitution deals with right to equality. So Article 14 ensures that the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. Article 15 states that the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, and place of birth, or any of them. No citizen shall, on the grounds of only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and places of public resort maintained wholly or partly of the state funds or dedicated to the use of the public. So आर्टिकल 14 ने क्या आंसर किया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब आइन की नजर में सब क्या है, इक्वल है. और आर्टिकल 15 ने बोला है कि स्टेट क्या नहीं कर सकता, कोई भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ये सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. Then Article 16 lays down that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. No citizen shall, on grounds of religion, race, sex, caste, descent, place of birth, residence, or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment of the or office under the state. Article 16 ने बोला है कि एम्प्लॉयमेंट के जो मैटर हो गए, अपॉइंटमेंट रिलेटेड मैटर में सबको क्या देना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी. Okay, then Article 17 states that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. So Article 17, which is very important, it prohibits untouchability. Article 18 states that no title, not bring a military or academic distinction, shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from the foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. Then no person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign state. मतलब आर्टिकल 18 में यही है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो मतलब जॉब करते हो, मतलब इंडियन मतलब गवर्नमेंट का जॉब होल्डर हो, या कोई भी सिटीजन क्या नहीं कर सकते, दूसरे जो फॉरेन कंट्री है वहां से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते. और कोई गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करने से पहले प्रेसिडेंट से क्या लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और कॉन्सेंट लेना पड़ेगा. देन नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22. Article 19 states that all citizens shall have the right to freedom of speech and expression, to assemble peacefully and without arms, to
form associations or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. आर्टिकल 19 से आर्टिकल 20 तक जो फंडामेंटल है वो है क्या, राइट टू फ्रीडम. सो आर्टिकल 19 पे बोला गया है कि सभी सिटीजन का क्या क्या राइट्स है, बोलने का अधिकार है, देन एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, देन इंडिया की जो टेरिटरी है वहां पे क्या कर सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, खुद को सेटल कर सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं. Then Article 20 states that no person shall be convicted or any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. So Article 20 में बोला गया है कि एक क्राइम के लिए क्या होगा, एक ही पनिशमेंट होगा. Article 21 states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. आर्टिकल 21 में बोला गया है कोई भी लोग किससे डिप्राइव नहीं हो सकते, खुद के मतलब जो पर्सनल लिबर्टी है, लाइफ से डिप्राइव नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा मतलब क्राइम करने से तब जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है, जो लॉ है, उसके हिसाब से उनको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा. Then Article 21A states that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. Article 21 पे बोला गया है कि ये स्टेट का क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट को क्या करना पड़ेगा, जो 6 to 14 years के बीच चिल्ड्रन है उन लोगों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है. Then Article 22 states that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया है, कस्टडी में लिया है, तो वो क्या कर सकते हैं, खुद को बेल कराने के लिए किसी भी मतलब जो लीगल प्रैक्टिशनर जैसे लॉयर को खुद के चॉइस के मुताबिक हायर कर सकते हैं. Then every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the magistrate. मतलब कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उनको विदिन 24 आवर्स जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है वहां पे क्या करना पड़ेगा, हाजिर करवाना पड़ेगा. Then another fundamental right is rights against exploitation from Article 23 and Article 24 deals with this fundamental right. So Article 23 states that trafficking in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of these provisions shall be an offence punishable in accordance with law. Then Article 24 states that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. मतलब आर्टिकल 23 में बोला है prohibition of traffic in human beings और आर्टिकल 24 is about prohibition of child labor. Then from Article 25 to 28 of the Indian Constitution deals with right to freedom of religion.
Here Article 25 states that all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to profess, practice, and propagate religion freely. Article 26 states that every religious domination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. Article 27 states that no person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payments of expenses for the promotion or maintenance of any religion or religious domination. So आर्टिकल 25 में बोला गया है कि हमें क्या है, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग के पास फ्रीडम है, और हम लोग जो रिलीजियस मैटर्स है वो क्या कर सकते हैं, खुद ही मैनेज कर सकते हैं, और स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता फॉर practicing any religion. Then Article 28 states that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. So, मतलब आर्टिकल 28 में बोला गया है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मतलब स्टेट फंडिंग देते हैं वहां पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता. Then another one is cultural and educational rights, Article 29 and 30. So Article 29 is about protection of the interest of the minorities. So यहाँ पे यही बोला गया है कि any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. No citizen shall be denied admission into any educational institutions maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste, language, or any of them. Article 30 states that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. मतलब आर्टिकल 29 और 30 में बेसिकली माइनॉरिटीज का जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट किया गया है. यहाँ पे बोला गया है कि जो माइनॉरिटीज मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकता है, लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटीज भी हो सकता है, कि ये माइनॉरिटीज क्या कर सकते हैं, उन लोगों के पास क्या राइट है, वो लोग उन लोगों के चॉइस के मुताबिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं और वो चला भी सकते हैं. उसके बाद उन लोगों का वो लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों का जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, वो सब प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. उसके बाद वो लोग कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट मेंटेन करते हो वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं. कोई भी उनको वो जो राइट है वहां से क्या नहीं कर सकता, डिप्राइव नहीं कर सकता. आर्टिकल 31 is about right to property, which is not there in the category of fundamental rights at present. In the sixth fundamental rights, which is inserted in the Indian Constitution in from Article 32 to 35, is right to constitutional remedies. Article 32 is on the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. The Supreme Court shall have the power to issue directions or order or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, warranto, and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. मतलब जो लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये है आर्टिकल 32 से 35 तक. आर्टिकल 32 में बोला गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं. या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने से
जस्टिस मांगने के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट पे जा सकते हैं। Article 33 is on the power of Parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces. मतलब आर्टिकल 33 जो है यहाँ पे मतलब बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। कब? मतलब जब ये जो फोर्सेस है, जैसे आर्म फोर्सेस जो है, डिफेंस फोर्सेस जो है, उन लोगों का मतलब एप्लीकेशन का जो मतलब फंडामेंटल राइट्स है सब उन लोगों को नहीं मिलता, ये मॉडिफाई करके उन लोगों को मिलता है। एज इट इज नहीं मिलता, जैसे जो कॉमन सिटीजन है उन लोगों को मिलता है। Then Article 34 states that Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of the state or any person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration in order in any area within the territory of India where martial law was in force or validated any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or other act done under martial law in such area. Article 35 states that Parliament shall have and the legislature of a state shall not have power to make laws with respect to any of the matters which under clause 3 of Article 16, clause 3 of Article 32, Article 33 and Article 34 may be provided for by law made by the Parliament. So, here in this video, we have discussed in detail about the fundamental rights and the importance of fundamental rights, amenability, how fundamental rights be amended. So, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, काइंडली शेयर द video with your friends and tell them to subscribe.